इसमें देखो शुरू से देखो, शुरुआत करते हो गड़बड़ से गड़बड़ होता है. Whenever systematics collection क्या है? Whenever I create an object of any class, if I create an object of any class, that object can hold single value. There is a and forget private and public this time. Forget. Okay, make it as a public, no problem at all. Or go with the mean, doesn't matter. Within the word. Static word. A1 dot value so uncle, this time this object called A1 only can hold single value, 0.1. Okay? Or you can make an array. Or you can make an array. Or you can make an array. Now you can hold, but if you make an array, you have to mention the subscript. Listen, you have to maintain the subscript. Is called array. Now Ram, now this time you can hold up to 0, 1, 2, 3, 4 amount of data in this C variable, which is of integer type. So object is having a variable which can hold single element, or we can make an array with a fixed size, array with a certain size. Then variable can hold multiple data. But if that object and the variable called C can hold multiple data, can hold by declaring as a what? Array, or without array, single element. Character data, the man who hasn't practiced mode of string, he can mode of array, he can go for collection interview. Because collection originates from array. The man did several our practice in array. He can go for giving an interview of collection. To go in array in C# or array in Java and array in C++. But syntax of array in C is quite dissimilar to C#, and Java syntax similar to what array in C#. ये बोलने की आपको जरूरत नहीं है. And you come back to point. So uncle, this time my variable called C of a string type can hold 22 records, 0 to 23 records, 0 to 22. It means Arora, this C variable only can hold string. It is one collection. It is one collection of items
which can hold string type. I want to hold. So what is C0? C0. C0 Sandeep. C1 Anurag Singh. C3 Uncle Ji. C4 Ram. This Sharad. I can hold multiple data. I can hold multiple data of similar type in array. तुमको मैं नर्व्स कहाँ से पकड़ा? I can hold multiple data of similar type in array. It is again a collection of similar type. But I want to make a linked list or list. The first row name, second row corresponding age. Sandeep Karan age, Uncle Ji age, Anurag Singh age, Sharad Kumar age. Now, int AG again. Sorry. New word int or word. We have got two columns. One column of integer type and second column of the word. Now go with the you write your name, double quotes, Sandeep, and corresponding data for age. Sorry, 0 and what? What A1 dot what? AG 0 and corresponding age 21. Alright, again you go for, don't waste time, Control C and Control V and go with the C 1 and go with the what? 1 and it means if I go for implementing array, in C#, if I go for implementing an array in C#, my object can hold multiple data of similar type. This object is having a variable which only can hold a string type. Or this object is having a variable called which can hold integer type. So I can say object is a collection of variables, but every variable is having a similar type or different type. Having a different type. Point 1. How I can solve this question and when to use collection. So what is collection? It's not under real collection. But I'm trying to understand, or trying to tell you, if you open the complete reference of C# or black book of C#, he had given same example in that collection. If there is an object, is having 4 variables, 4 are all of array type, but they have got different types of data. So my object is a collection of variables, but different type of data. Second example. Second scenario. When to use collection? There is a class A. Second scenario. It's a scenario for 5+ experience, सुनो राम, and 10+ experience. जो भी मैंने example दिया, वो 0 से 5 चलेगा. You go above 5+. Uncle, here I have int x (1, 5, 8,
There is an array. Sorry, it's not a correct. मेरे को याद है चक्कर वाला सी उसका. There is an array of having 4 elements. Second beta example collection. And I want to apply cell sort for this element or double sort for this element. How I can go? It means I have to 5 plus का बंदा बोल रहा है. I have to write a program for simplifying the sorting of cell sort. Now I want to make a pre-order or post-order in binary tree. Uncle, what is collection? It is a one definition of collection. Collection means there is an object is having multiple variables. This is the collection. When a man opened Bala Goswami as a fresher, they can go for having an array in the class, or they can treat the object as a collection of variables. अगर लिखते चलो याद ही रहेगा. उसने राम जो उसने कलेक्शन पढ़ा था, तो कलेक्शन नहीं पढ़ा, उसने एक क्लास में क्या बना दिया बोलो, 2-3 एरे डिक्लेयर कर दिए और वो एरे मल्टीपल डेटा होल्ड करेगा डिफरेंट टाइप्स का. तो उसने क्या बोला, ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स. बट एवरी वेरिएबल इज ऑफ डिफरेंट टाइप. ठीक है, ये बेटा आपका फ्रेशर लेवल में चलेगा किसी कॉलेज. लड़का बेटा 5 प्लस, नलायक बेटा 3 प्लस, ये नहीं चलेंगे वहाँ. ये लड़का बेटा 7 का पास आउट नहीं चलेगा. He has to give an example when to use a collection or what is collection. Collection means object is having multiple variables of different types. Okay? क्लास है, क्लास के बाद डिफरेंट टाइप के होता है. कलेक्शन क्यों आया? मैं बता रहा हूँ, ये तो हो गया क्लास में एरे तुमने यूज कर लिया. तो अगर बेटा ब्लैक बुक खोलोगे ना, तो बोलता है कि क्लास में मल्टीपल एरे बना लो और एक ऑब्जेक्ट उसको इनिशियलाइज कर लो. इट्स वन काइंड ऑफ कलेक्शन, बट इट इज अ बेसिकली फ्रेशर डेफिनेशन. बट इफ यू गो फॉर 5 प्लस डेफिनेशन, व्हेन कलेक्शन टू बी यूज्ड, वही बेटा एग्जांपल दे रहा हूं. देयर इज ए इंटीजर एरे, आई वांट टू गो फॉर सेल सॉर्ट फॉर दिस एरे. फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन, आई वांट टू गो फॉर लिंक लिस्ट, doubly linked list. I want to go. Means sitting in C#, worked several years in .NET. I have to write a program for those. So what is, सुनो यहाँ देखो, अनुराग, what is collection for 5 plus experience? Then the .NET says system.collections is an namespace. System dot collections is an namespace. क्या देखना बेटे, या तो मेरे को देखो. तुमसे पूछता है why collections. तुम क्या 5 plus head of strong है, क्या बोलो? उसको ये बोलो, सर I want to make a program in C#. Which program you want to make? There is a requirement for cell sort. There is a requirement for binary sort. There is a requirement for in order, pre-order, post-order. I want to work in binary tree. This time I did binary tree in C and data structure. In C or in C++. How I can recall those programs is sitting after 5 years in .NET. एक बच्चा बोलता है साला collection means object, collection is collection of variables in object. ये तुमको नहीं बोलना है. तुम बताओ कि what is collection and when to use collection. There is a requirement. I pick up a data from database. समझो करो. There is a requirement. I pick up a data from database while rd.read, and I'm getting a data of completely non-organized way. I get 4, then 3, then 5, then 7, like this. And I want to apply sorting on that data
I want to apply the first apply AD.NET for fetching a data as a salary, and you will show the salary in ascending order or descending order or any sorting mechanism. How do I sort it? It means again I have to open the book of Dharam of data structure or C. Let us see. I can go for remembering the cell sort program and binary sort programs. Why do we? क्या मतलब? So why do we? क्या बोलना चाह रहे हो? सर मेरा एमएससी के 5 साल हो चुका, अब मैं प्रोग्रामिंग क्यों करूं सॉर्टिंग का? So for me, what is collection? Second example. There is a mobile. I wanna write. Second example. So मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूं. क्या प्रोग्रामिंग करूं बुढ़ापा में आकर इस वक्त? Second program. I wanna write. Wish you happy birthday. Why do we write? Is there any template in a mobile? Is there any template in a mobile? I can write happy birthday without typing happy birthday. I can only change from and to. So what is collection, uncle? उस अब basic गधों से निकलिए. Collection means there is an MS space. It has got 100 of classes inbuilt. It has got 100 of classes inbuilt, which can simplify your programming skills. Yes. इसमें क्या बोला? मैं इस वक्त शेल शॉट का प्रोग्राम कैसे लूँ? सी के बुक को रेफर करूँगा या प्रोग्राम लिखना शुरू करूँगा? अंकल लिखने में मेरा समय निकल गया सारा. अगर एक डेवलपर अगर कलेक्शन नहीं जानता तो दिक्कत क्या होगा? अगर एक डेवलपर अगर अंकल कलेक्शन और जेनरिक्स नहीं जानता है, इसका मतलब वो बैठ के खुद प्रोग्रामिंग कर रहा है. बोलो किसका? सॉर्टिंग का, या लिंक लिस्ट का, या डिक्शनरी का, या हैश टेबल का. और बाइनरी ट्री का, डबल लिंक लिस्ट का. मैं कितनी बार बोलूं आपको, मेरे पास एक नेमस्पेस है जहां पे सारे इस तरह के प्रोग्राम्स बने हुए हैं. इट इज माई कलेक्शन. यू कैन यूज माई कलेक्शन एंड corresponding क्लासेस इफ टारगेट मीट्स. अगर नहीं मिलता है जी तो प्रोग्राम लिखना ही पड़ेगा. तो बट जितने आपकी खतरनाक क्लासेस हैं जो आपने सी को छोड़ा जमाना हो गया, उसके सारी क्लासेस अभी मुझे वेक्टर में काम करना है, ग्राफिक्स में काम करना है, डबल लिंक लिस्ट में काम करना है, डिक्शनरी के ऊपर काम करना है. मैं कहां से प्रोग्रामिंग करूं इस एज में आकर? ये मत कहो मैं प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता. ये सी शार्प इज सुपीरियर देन सी और C++. डोंट ट्राई टू से कि नाउ C sharp does not support C and C++. The man who has made program of, जैसे अंकल अभी आपने मेरी क्लास करी, आपने हर क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग कर दी. Don't mind, after 5 years, if you want to refer the concept of data set, you can connect to me, Sandeep Karan. You can call me at any point of time. I can come at your place to teach you the data set. Why do we, Sandeep? I had attended your class 5 years back. I made a sorted 5 or 6 example for data set. So what is collection? After 5 years experience, जो चीज आपने छोड़ दिया उसका कोई संग्रह है कि मैं बिना प्रोग्रामिंग लिखे उस संग्रह को यूज कर लूं? आई कैन सेव माई टाइम. इन दिस कॉपी अंकल, all the programs of WCF is kept. All the programs. By my handwriting. In this program, all programs of WCF. Only WCF. From very first topic to last topic. In 2007, 5 years back, I want to teach transaction, exception handling, message contract, link you in WCF,
procedure for WCF via link queue. Why do we write a program at my residence? If I write a program in night that day, I am really doing a duplicacy of code, redundancy of code. Why? And poor memory management. Okay, Sunday batch 9:30, 11 o'clock, झंकार बैच 12 बजे. ओके, हम लास्ट क्लास में क्या पढ़ाए थे? प्रोसीजर विद अ लिंक क्यू. इस बार क्या पढ़ाएंगे? ट्रांजैक्शन. व्हाई डू वी राइट अ प्रोग्राम अंकल? आई कैन रेफर माई प्रोग्राम्स, आई कैन सी द प्रोग्राम्स. इट मीन्स अ मैन इज डिक्रीजिंग हिज कॉम्प्लेक्सिटीज. मैन इज डिक्रीजिंग हिज complexities if he has assorted those programs in a comp. They can refer, they can recall. Otherwise, I have to open the book of C and data structure to remembering those programs. So what is collection for me? Being as a tech lead or project manager, I want to guide my teams. I refer data, don't write a program for sorting here or cell sort or dictionary or graphics. Rather than you refer a namespace called collections. It has got all the programs. Uncle, in a mobile, you just open the mobile, there is SMS, there is a template. In that template, all the relevant messages are kept. You want to write a message in a short time to your friend, I am in a meeting, please call me after some time. Why do we write this message? I refer the template of SMS, only change the word to whom I am basically writing the message. Otherwise, good tick 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 type. So what is a collection for me? By using collection, I can simplify the development time. I can have more accuracy of programs because I am referring a inbuilt program made by Microsoft company. Collection means there is a My Jamana, it's called Punjika. I wanna go for IT preparations for mathematics. One man has given last 10 years IT question bank. I can get the patterns of last 10 years. Getting? So what is collection? When to use a collection? When I want to write a complex program. Not really. For me today, my C is complex because I have forgotten the entire programs of C, single linked list and doubly linked list. I can take the class in Center for C. Why I am hiring a Sadar uncle, Sadar Bhaiya for class of C. He is in touch of C. He is working in C. He don't want to refer any programs by anyone. But if you give me 10 days of time, I can take a batch of C. But if I keep concentrating on batch on C, what about my WCF and .NET and groups then? So I have made 4 collections in my center, which can simplify my task. Saxena sir for design pattern, Saxena sir for basic UI layer in ASP.NET and project training, Abhishek Gupta facilitating a lab students and a great. Finally, last. Who last? Dipti. So what is collection? All the complex programs are categorized in that namespace, or how much, as much, not how much, as much. If you try, don't try to programs if it is there. Otherwise, write a business logic of that. तो हमने देखा अंकल कि मेरे मैक्सिमम प्रोग्राम्स हमें वहाँ मिल जाते हैं, जो नहीं मिलते हैं उसका तो प्रोग्राम हमें लिखना ही पड़ेगा. ठीक है, अब आप देखिए यहाँ जो छूट गया उसे छोड़ो मत, जो छूट गया उसका कलेक्शन बना के क्या कर दो, रख दो.
और कभी तुमको रेफर करना पड़े उसको यूज करो, which can simplify your complexities. The main subjective of using collections, I can simplify my programming skills. I can recall my own programs in .NET. The real use of collection, the power of collection is to reduce complexities or to ease complexities. How? I said, no. There is a Vakada namespace called collection, which has got those programs which we use rarely in our programs, applications. If once it is needed, I don't need to write the same program again. I can refer those programs, I can simplify my task and reduce development time and produce maximum productivity. और अचानक माइक्रोसॉफ्ट ने C# 2.0 में लॉन्च कर दिया जेनरिक्स कंपेयरिंग टू कलेक्शन। अभी मैं शिकायत अंकल नहीं करूंगा कलेक्शन का, मैं अपने कलेक्शन के ऊपर, कलेक्शन क्या है, एक आदमी की चाहत है। मेरी माँ को जाके देखा वहां पे, उस नालायक ने क्या कर रखा है, जो पुराने जमाने के सामान थे अब तक संभाल के रखी हुई। तो मैंने कहा माँ सबको हटा दो, गुस्से में आ गई हो। बेटे आप ये सब चीजों को नहीं समझोगे, इनसे मेरे पुराने रिश्ते हैं, आप तो बहुत बाद में मेरी जिंदगी में आए हो। उन दिनों का ग्रीस ओवर, उन दिनों का, और जैसे क्या बोलते थे वो, सिलाई, उनकी बुक 70s की बुक अब तो नालायक संभाल के रखी हुई ब्रीफ केस में, और कोई छू दे तो जान मार दे उसको। वो तो तुम लोग इसके लायक नहीं हो। काश कोई बेटी होती तो समझती मेरी बात को। तुम लोग का कलेक्शन किसी और चीज का है, मेरा कलेक्शन क्या बोलो किसी और चीज का। अब तक उस जमाने की एल्बम संभाल के रखी हुई, 60s की 70s की, एक फोटो गायब हो जाए हालत खराब हो जाए उसका, तो उसके पुराने मेमोरीज हैं। She has kept in her brain with the photographs, and whenever she gets free, she try to go in that moment. आप चलो, आप मुझसे खेल लेती है, मेरे पोते से खेल लेती है, उसके तो फादर थे, उसकी तो मम्मी थी। How she can recall those moments? She has got some jewelry, she has got something sari in that marriage. She has kept those things still in a briefcase and a suitcase, and that is saying कि हमारे लिए करोड़पति से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो बेटे हमें पैसा मत दिखाओ, ऐसे बोलती है, तुम लोग जो अपना यूज करो, तुम मुझे छोड़ दो। तो she has made the memory of those days as a sorted। हाँ तुम लोग उसको खोलना मेरे जाने के बाद, बट मेरे जाने तक इसकी कमेंट मत करो इसको। अब 5-6 बक्सा उसका भरा हुआ है, कोई टच नहीं कर सकता। तो अपने पुरानी यादों का बोलो क्या वो बनाई, कलेक्शंस बनाए। तो उसमें बोलती बेटे उसमें तुम नहीं थे कि तुम मेरे पापा को नहीं देखे, मतलब उतना नहीं देखे बचपन में, वो सारे फोटोग्राफ संभाल के रखी हुई। तो एवरी लेडीज कैन हैव अ एसोसिएशन विद द kid and the husband, but she had a last days with the father. How she can recall those moments? She has got a assorted, and whenever she gets time, she wanna go past, she can go. The man moves every time, sometimes in past and sometimes in present and the future. तो मेरे को अभी इस वक्त पास्ट का प्रोग्राम याद करना है, किसका, सेल शॉर्ट का, मर्ज शॉर्ट का, डिक्शनरी का, बताओ मैं प्रोग्राम कहां से लाऊं। अगर सुनो बेटे, अब आगे आर्किटेक्चर पे, लिखने में क्या बुरा है, वो बदतमीजी पर उतर गया बंदा, लिखने पे क्या बुरा है, उसका आंसर सुनना, लिखने पे क्या बुरा है। उसने बोला अगर मैं लिखने बैठूंगा ना तो मेरी मेटा डेटा की साइज बढ़ेगी, अगर मेटा डेटा की साइज बढ़ेगी तो सिरार मेरा एग्जीक्यूशन टाइम क्या करेगा बोलो, स्लो कर देगा।
कंपाइल्ड ऑलरेडी यार। तो बहुत जिद की इस बार, तो माँ ने अपना वो खोला, एक दो एल्बम दिखा रहा, ये तेरे मतलब ये तेरे नाना है, वो तेरे मेरे भाई है, मेरे वो मेरे मौसेरे भाई हैं, सारा फोटो संभाल के रखी, अपना वो बीएड जो भी करी उसने, उसका मिलता था वो सब कुछ संभाल के। तो अ मैन इज हैविंग अ कलेक्शन ऑफ पास्ट। तो सी शार्प में आके हमारा पास्ट कौन है बोलो? सी। अब आ जाइए, अब देखिए सिस्टम डॉट। अब देखते हैं अगर मैं सी शार्प में आया तो मेरा क्या स्थान है सी शार्प। ऐसा ना कि मैं सी शार्प के चक्कर में पुराने प्रोग्राम्स को भूल जाऊं। तो उसने कहा कि बेटे आपसे रिश्ता तो मेरा है ही, बट मेरे पुराने रिश्ते भी हैं, और जितने लोग यहाँ बैठे हैं आप सबको प्रणाम करें, आपके ये लगते हैं, आपके वो लगते हैं। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। अदरवाइज 20 साल जब आप आओगे, 20 साल के बाद आपको कोई मेरे नाम से नहीं जानेगा। am I right? अब जाऊँ घर वाला? हम अपनी क्लास बना के कलेक्शन में हाँ कर सकते हैं। अब देखिए देखिए व्हाट इज कलेक्शन? कलेक्शन नेमस्पेस कंटेंट्स interfaces and classes that define various collection of objects. इसी को बोलते हैं टेम्पलेट्स, सच है लिस्ट। अब मैं सी शार्प लिस्ट के ऊपर काम करूं, मैं अंकल तब काम करूंगा जब मुझे वो फंक्शनैलिटी मिल नहीं रही। इसे मैंने देखा है, जितने पुराने लेडीज हैं वो चीजों को बारीकी से संभाल के रखते, जो किसी घर की लेडीज को ना हो, उनका हर चीज में याद जुड़ा हुआ। जब उनका वो फैमिली नहीं रहा और इस घर में आ चुकी हैं, पर उनको पास्ट कहीं ना कहीं खोजता है। तो लिस्ट, क्यू, बी टेबल्स और हैश टेबल एंड डिक्शनरी। और कितने क्लास देखोगे, थक जाओगे, खत्म नहीं होगा, चलता रहेगा। अब मान लीजिए अंकल अभी मुझे इस वक्त काम करना है, इस वक्त काम करना है, मेरा एक प्रोजेक्ट आया है जहां मुझे भी काम करना है इसके ऊपर, लिस्ट के ऊपर। मैं क्या करूं इस वक्त? ये तो लिस्ट का फंक्शनलिटी बनाने बैठ जाओ या बने बने प्रोग्राम को आप यूज करो। ये आप ये दे दें, आप नेक्स्ट खोजिए, नेक्स्ट खोजिए। तो यहां से अंदर 5-6 क्लास का नाम याद रखना मस्ट है। और क्लास में क्या है बेटे? बने बनाए फंक्शंस है। क्लास का बना ऑब्जेक्ट, फंक्शन कॉल करो, डेटा पास कर दो, आपको सॉर्टिंग आउटपुट मिल गया। तो इससे अंदर मेटा डेटा की साइज क्या हो गई बोलो? कम हो गई। कंपाइल्ड ऑलरेडी टेस्टेड है यार। यस। अब आ जाओ वाई कलेक्शन इंडोर। गॉड, इसने लाजवाब लिखा है, पूरा पढ़ रखा है इसमें। बेटे सी शार्प का फंडामेंटल है ये, किसी ब्लॉक्स का साइट है। इसने बता रखा है अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो कौन कौन सा क्लासेस को याद करिएगा। ये मोस्टली पूछते हैं आपसे इंटरव्यू। मैंने पूरा पढ़ रखा है सबको यार। अब आ जाओ, हमें प्रोग्रामिंग पढ़ना ही नहीं है। द आर्टिकल फोकसेस ऑन मैनेजिंग ऑफ कलेक्शंस इन .NET फ्रेमवर्क 2.0। कलेक्शंस रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो बेटा मैं अपना ऑब्जेक्ट बनाकर वो फंक्शनैलिटी अचीव करने का ट्राई कर रहा था। कैसे बोलो? एरे से। मैं वो फंक्शनैलिटी एरे के द्वारा अचीव कर रहा था। आई वाज बिगिनर इन सी शार्प। अब अंकल उल्टा बोल रहे हैं। तो कितना गधे थे यार। हम एरे बनाकर डेटा डालते थे,
अब क्यों बनाया एरे? मैंने बनाया क्या बोलो सारे लिस्ट। तो पहले करा और बाद में बना बनाए चीजों को यूज किया। अब लगा मैं कितना बेवकूफ था। तो कलेक्शन रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बंदे ने क्या लिखा है? दैट यू कैन एक्सेस बाय स्टेपिंग थ्रू व्हाट ईच एलिमेंट इन टर्न। डॉटनेट प्रोवाइड्स स्पेशलाइज्ड बाय गॉड। तो उसने अपने शादी से लेकर, अपने बचपन से लेकर, जो उसको मेरे नाना उसके फादर ने दिया, सब कुछ को उसने समराइज करके नहीं रखा है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेशलाइज्ड। हेलो, कहां से बोल रहा है? घर से मैं आ रहा हूं बस। The Ordnance framework provides specialized classes for managing collections. And excuse me, these classes have rich capabilities for enhancing your programming experience through better performance and easy. क्या बात है, क्या बात है। और सारे देखो अंकल क्या बनाया है। मुझे लिस्ट के ऊपर काम करना, मैं कैसे काम? जबरदस्त बनाया है, इसने पूरा पढ़ रखा है सबके प्रोग्राम। सेट ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ ऑब्जेक्ट, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट। बेटे हमने कहा 4 क्लास हैं, तो 4 क्लास के बोले क्या होंगे? ऑब्जेक्ट होंगे। 4 ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो ये तो सेट ऑफ क्लासेस होते हैं। अब भाई क्लास का भाई रियल यूज क्या है? ऑब्जेक्ट है भाई। क्लास से बता तुम क्या कर लोगे? मैं तो उसका ऑब्जेक्ट है ना भाई। रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है। उसको मुझे क्लास से क्या मतलब है? हमने क्या कहता ऑब्जेक्ट रेफर टू क्लास। अरे बोल यार, हमें ऑब्जेक्ट दो यार। क्लास का हमें क्या करना कि मुझे पता है कि ऑब्जेक्ट में किसकी गुण है? क्लास की गुण है यार। डेटा सेट मत बोल, अब उसका मुझे ऑब्जेक्ट दे, तू काम की बात कर। अब आ जाए, ब्यूटीफुल आंसर है, ब्यूटीफुल आंसर, ब्यूटीफुल, मजा आ गया। कैसा बेटे? अब उसका तुमको भी क्लास बना, कोई भी तुमको अच्छा लगता है। अब यहाँ फंसोगे, इस साल यही फंस रहे, किसी ने मुझे करे। अब इसमें से कोई भी एक बोलो, क्लास को ईमानदारी से कर दो। तो तुम भी कोई चीजों का एक कलेक्शन बनाओ। हमने लिस्ट पे काम करा था कि तुमको जो अच्छा लगता है, जो क्लास लगता है, उसको डाल दो काम। अब देखिए अंकल, यही काम करना होता, यही काम करना होता। मैं क्या करूं बच्चे वाले का? मैं यही काम करना होता। क्या करूं? एरे लिस्ट ए वर्ड न्यू वर्ड एरे लो। कोई एरे करवाने की कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं करना है अंकल, बन गई। स्पेलिंग ठीक कर लीजिए। और ए डॉट ऐड, ए डॉट ऐड, ए डॉट। नहीं आ सकते वाला एक क्लास प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, फंसोगे इंटरव्यू। ऐसे कोर्स खत्म नहीं हो जाता है, देखा हो गया। बट इट इज अ फीचर ऑफ C# 1.0 और 2.0 का फीचर ग्रुप कौन है? टॉपिक हम डिस्कस नहीं किया इसमें। अब इसी का ड्रॉबैक डिस्कस करेंगे परसों वाली क्लास में। तो क्लास कब हो गया? और फ्राइडे अपना बैच 1 बजे के बाद ही रखना, ठीक है ना? कि लाइट में दुखी कर रखा है। और लाइट को कम कटी है थोड़ी, आज सुबह कट गई थी। आज दिल्ली चली लाइट गाड़ी है वहाँ। अब तो बिजली भी मांगा होगा। अच्छा कर
32%, 24% तो बढ़ा ही है और उसका 8% सरचार्ज सबका बढ़ गया। अब प्रोग्राम भी टेक है अपना जाके बना लो अपना बच्चे वाले, ठीक है। अच्छा डाल दिया कपूर साहब ने, मुझे नहीं आया था उस दिन, वही कपूर साहब था। अरे तुझे खाना खाया तेरे साथ बैठ के, दुनियाना वाला बच्चा, अमृतसर वाला, अमृतसर कहाँ की, तू कहाँ की है? अच्छा अमृतसर के नहीं लड़का है, गोरा सा लड़का है, लंबा सा। हेलो हेलो, हाँ बेटा बोल, हाँ हेलो बेटे, हाँ बोल। मैंने बोल दिया बच्चों को हेलो, बोलो कब तक चाहिए, बोलो कब तक चाहिए तुमको, बताओ। छह यूनिट कहाँ पे भेजना है, बोलो कहाँ भेजना है? स्कॉट में तेरा मोबाइल नंबर देते हैं बच्चों को, ठीक है? नहीं कोई ग्रुप चलेगा, कोई भी हो जाएगा। हाँ कोई भी चलेगा। हाँ वो तो फिर चेंज कर देंगे ना, अपन से ग्रुप कौन जा रहा है भाई? 2 हो गए और ब्लड देना है बस यार, 6-7 यूनिट देना है, 6-7 यूनिट देना है। कार्ड से है क्या? मेरे नहीं लेंगे तो उम्र के हिसाब से मेट्रो वाला ने मना कर दिया, लेंगे बड़ी मुश्किल से। मैं वॉलंटियर देने वाला हूँ, 22 है ना, आप दे दो ना, क्या वो कुछ नहीं होता। मैं तो मनीष कुमार सिंह जानता है चलो स्पॉट में नंबर दे दो, वो बदल गया। हाँ 4-5 बजे तक चल नहीं रहे बेटा, हम नहीं जाओ, हम कल जाएंगे। उसके फादर को बाईपास सर्जरी हो चुका है और हार्ट में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है। 6-7 यूनिट एक आदमी कितना दे सकता है? 1 यूनिट, 2 हो गए और देखता हूँ।